With the following data of X and Y Limited, we have to calculate pre-merger EPS and post-merger EPS. Profits are given of X and Y Limited. Equity capital is given along with the face value of 10 each. If the proposal is that X will absorb Y Limited, now this is a case of absorption. Y Limited will not have any identity after it is absorbed by X Limited. Okay. X will absorb Y Limited by issuing 1 share of every 2 shares held by shareholders of Y Limited. Compute the following pre-merger EPS and post-merger EPS. Now they have given this ratio. 2 shares will be cancelled. Y का 2 शेयर कैंसिल होगा और उसके जगह पे X का 1 शेयर हम लोग अलॉट करेंगे. X will offer only 1 share for every 2 shares. That means शेयर होल्डर्स के पास जिनके पास 2 शेयर है उसको 1 ही शेयर मिलेगा. प्री मर्जर ईपीएस तो इजी है निकालना. आपको ईपीएस निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए इक्विटी कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करो. इसका 10,000 आ रहा है और इसका 9,000 आ रहा है. 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000. 90,000 divided by 10, 9,000. Pre-merger EPS earnings 1,50,000 divided by 10,000. $1,50,000 divided by 10,000. ₹15 आया. ठीक है. फर्स्ट का आंसर है 15 EPS, 15 पर शेयर. सेकंड का 2,50,000 डिवाइड बाय 9,000, 27.78 per share. This is EPS pre-merger EPS. First you have to calculate number of shares and after you have to divide with PAT minus preference dividend divided by number of equity shares, 15 and 27.78. ठीक है. $27.78. So this is pre-merger EPS. Now we are going back again. Post-merger EPS. For that information is given. How many shares are there? 9,000 shares will be cancelled and 1 share for every 2 shares. So you can calculate 9,000 shares into 1/2. पहले 90,000 को फेस वैल्यू से डिवाइड करो. 9,000 शेयर्स आएंगे. ये इक्विटी कैपिटल है 90,000. उसको 10 से डिवाइड करो. 9,000 आएगा. 9,000 को into 1 divided by 2. 4,500 shares. 9,000 into 1/2. 4,500 shares. Number of new shares issued by X Limited. Total shares of X Limited. Now we have to see how many shares in the old sum. 1 lakh divided by 10. They have already 10,000 shares, old shares with them, and X Limited is offering 4,500 shares. So total shares are 10,000 plus 4,500. 10,000 old shares
4,500 new shares. So 14,500 total shares. Now they want us to calculate new EPS after merger, post-merger EPS. Post-merger means merger के बाद का EPS. Total PAT of two companies. You have to check in the question. Profit after tax है 1,50,000 plus 2,50,000. 1,50,000 together 2,50,000. 4 lakhs. So total profit of both the companies is 4 lakhs and divided by total shares. Old shares 10,000 plus new shares 1 by 2 किया आपने 9,000 into 1 by 2 4,500. तो 14,500 से divide करना है. 4 lakh divide by 14,500. 27.58. $27.58 per share. Creta Limited is intending to acquire Zeta Limited by merger. Exchange ratio is based on market price per share. So we have to take market price, but in this question, you are not given market price. You have to calculate market price on your own. Okay? वो कैसे होगा? अब PE ratio दिया है और अगर हमें EPS मालूम है, PE ratio दिया है, तो we can cross multiply. You can multiply PE ratio with EPS. You will get MPS. Formula of PE ratio is MPS upon EPS. If you have EPS information and PE ratio information, you can cross multiply and
you can calculate EPS. Oh, sorry, market price per share. So it is very easy. How to calculate the MPS? Just multiply EPS with PE ratio. Calculate MPS for both the companies. First, you have to calculate EPS. 1000 divided by 100. 1000 divided by 100, 10 rupees. फर्स्ट का EPS आया 10. जीटा का करना है 200 डिवाइडेड बाय 54. फर्स्ट का 10 आया, सेकंड का 4. EPS हमने निकाल लिया, ठीक है. 10 and 4 per share. Okay, this is our EPS. And PE ratio is given in the question. 10 into 10. EPS into PE ratio. 10 into 10, 100. 5, PE ratio 5. EPS 4. 5 into 4, 20. Market price 20 and market price Creta 100. 10 into 10, 100. 5 into 4, 20. Market price per share is equals to PE ratio into EPS. Calculation of new merger of new EPS after merger. Calculation of new EPS after merger. Market price is 100 and 20. Number of new shares issued by Creta. अब पहले बेसिस लेना है, यहाँ पे आपको लिखना है on the basis of MPS, on the basis of market price. आपको मार्केट प्राइस लेना है. टारगेट कंपनी जीटा का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, तो न्यूमरेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा यहाँ पर 20 into 50. दिस इज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट कंपनी जीटा. प्राइस 20 है और इसके नंबर ऑफ शेयर्स 50 है. प्राइस इज 20 and number of shares are 50 lakhs. 50 लाख शेयर्स और ये इसका प्राइस है. MPS 20 और 50 लाख से शेयर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100, 10 शेयर्स. So these are new shares issued by number of new shares issued by Creta Limited. Creta Limited will issue on the basis of market capitalization of target company Zeta. जो क्लोज हो रही है ना कंपनी, उसके नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं 50 लाख शेयर्स और उसकी प्राइस लेनी है 20. ठीक है, ये वाली प्राइस लेनी है और ये नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे 50 लैक्स है. ठीक है, यहाँ पे रुपीज इन लैक्स ही है, इसलिए ऊपर आप लिख सकते हो.
ठीक है, 50 शेयर्स कैंसिल होंगे, उसके जगह पे कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं हम लोग? 10। 50 शेयर्स आर कैंसिल्ड, आप इसको उल्टा लिख सकते हो 1:5. 5 shares will be cancelled, and instead of 5 shares, you will get only one new share of acquiring company Creta Limited. Exchange ratio 50 shares cancelled and 10 new shares are issued by Creta Limited. 1:5. अभी टोटल शेयर्स करना है, न्यू शेयर्स के बाद 10 शेयर्स आए, 10 लाख शेयर्स यहाँ पे लिखना है. 10 lakh shares. इशू प्राइस इज 100. क्रेटा का इशू प्राइस क्या है? क्रेटा के कॉलम में देखना है 100. इशू प्राइस इज 100. You got 10 lakh shares. टोटल शेयर्स करना है. क्रेटा के पहले कितने शेयर्स थे? 100 लाख शेयर्स. क्रेटा के पहले 100 लाख शेयर्स थे. ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ क्रेटा 100 lakhs और न्यू शेयर्स इसने इशू किए हैं 10 lakhs, तो 110 lakhs इसके टोटल शेयर्स हो गए. दोनों के अर्निंग्स को हमें ऐड करना है. 1000 plus 200 lakhs, 1000 lakhs plus 200 lakhs, 1200 lakhs. 1200 lakhs divided by 110. 1200 lakhs divided by 110 lakhs. 10.90 EPS after merger. Calculate EPS of Creta after merger. 10.90. Total PAT after merger 1000 plus 200, 1200. Total shares, old shares plus new shares 100 plus 10, 110. EPS after merger. You have to add profit after merger, मतलब दोनों का प्रॉफिट ऐड करना है. टोटल शेयर्स ऐड करने हैं, ओल्ड शेयर्स एंड न्यू शेयर्स. Total PAT after merger 1000 plus 200 lakhs, 1200 lakhs. Total shares, old shares plus new shares 100 lakh shares plus 10 lakh shares. ये न्यू शेयर्स जो ऑफर किए थे 10 lakh shares है. 110 lakh shares. EPS after merger, PAT upon number of equity shares 1200 lakhs divided by 110 lakhs.
Okay. Any doubts? Any doubts?